Good afternoon, everyone. Hope you all are doing well and you can hear me and see me. Good afternoon, Arpit sir. We can clearly see you looking sharp like always. We'll start the session in next 2 minutes. You can share your screen and set up your charts. Meanwhile, I'll do the context setting. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. Today we have the last session for the week and we have Arpit Beriwal sir who will be taking us through. We'll start with the Nifty, Bank Nifty index. We'll give you a trade if possible, a strategy trade most probably. If not, we'll move towards the stock options. BTST will take up some queries, give you some pointers for the upcoming week, some updates on the expiry that we are yet to receive from the NSE, as mentioned in the morning session. So feel free to drop your queries in the chat. हम एक एक करके आपकी queries लेंगे on first come first serve basis. It's a request. Please don't spam. ऐसा नहीं है कि आप 10 बार क्वेरी डालेंगे तो हम पहले आपकी क्वेरी लेंगे. It's first come first serve. So we are all set. Arpit sir, over to you. You can start the session. Sure. Very good afternoon, guys. Just want to check if your screen is visible. Yes, sir. Perfect. Very good afternoon, guys. So we are closing ahead of the weekend, and this series so far has been good for the bulls. A breather after continuously selling for last 5 months since September series till Feb, and now March we have seen good recovery in indices, Nifty, Bank Nifty, broader market. So the flow for the session would be starting with the Nifty Bank Nifty outlook, followed by the sectors that are outperforming, underperforming, how is the broader market shaping up, a few CDI calls because stock specific action is quite good. So थोड़े CDI calls में हम focus करेंगे जिसमें आपका generally definitely अच्छा handsome returns बन सकते हैं. BTST calls depend on the market setup wise, and we are ahead of the long weekend. So just to start with the index outlook, before that I like to talk about the circular. So yesterday we received an announcement. Initially there was the talking point about the change in the Nifty expiry of the weekly from Thursday to Monday. But as of now, the way the things are going on so far, it will be as it is. Tuesday for BSE, Thursday for NSE, and there are no changes as of now. It is put on hold. So as of now, the way the expiries have been traded on the particular date, वो अभी वैसे ही चल रहा है. And going forward, as soon as we get any other announcement regarding the same, good update on the same. And definitely we've seen a good uptick in the exchange related stocks because of this news. So coming back to Nifty first. So Nifty, if we talk about, I'll talk about the monthly time frame first. अगर आप monthly का chart देखें, a strong bullish candle has been formed after last almost 4 to 5 months of weakness. अच्छी bullish candle बनाई है monthly scale पे. Today being the monthly close, as Monday we have an off, market is closed, so today will be considered as the monthly closing for Nifty. Levels के बारे में बात करें तो वीकली सेटअप वाइज में भी एक अच्छा हमने रेंज ब्रेकआउट देखा था 22,500 के बाद लास्ट टू लास्ट वीक में होली के वीकेंड के बाद, एंड उसके बाद एक वीकली स्केल पे अच्छा मूव देखा हमने. लास्ट 3 से 4 दिनों से थोड़ा सा कूल ऑफ देखा डेली स्केल पे, बट इंडेक्स अब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. सो अगर मैं पूरी सीरीज के बारे में बात करूं, उससे एक अच्छा ब्रेकआउट देगा 22,500 से, जो लगातार रैली हमने देखी 23,850 तक का. पोस्ट दैट इंडेक्स इज सम कूल ऑफ देगा था 23,800 से टुवर्ड्स 23,400 लेवल्स, एंड नाउ लास्ट 3 to 4 डेज से इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है रिस्पेक्टिव टू 200 डेमा, जो 23,400 के पास में आज भी लो वहीं मारा है, वहां से रिकवरी हमने देखी है. एट द सेम टाइम 23,850, I'll repeat, 23,850 एक मेजर हर्डल जोन है जहां पे फ्रेश मोमेंटम 23,850 के ऊपर निफ्टी में क्रिएट होएगा टुवर्ड्स 24,200 24,400 लेवल्स के लिए. सो टिल दैट टाइम इंडेक्स एक रेंज में रहेगा 23,400 से लेके 23,850 की ब्रॉडर रेंज है. जब तक ये रेंज में है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा. So you have to keep this levels in mind. Now talking about Bank Nifty, so Bank Nifty was the hero or the outperformer for this month. If we talk about the broader market as compared to the Bank Nifty chart, a strong bullish candle on the weekly and the monthly scale, almost a bullish engulfing pattern on the monthly scale. Weekly scale पे भी एक डबल बॉटम का रेंज ब्रेकआउट दिया था 50,800 के ऊपर, कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है. वीकली स्केल भी काफी स्ट्रॉन्ग है. इफ यू सी द चार्ट आल्सो, क्लासिकल एक रेंज ब्रेकआउट दिया 50,600 के ऊपर, वो हो गया पोजिशनल लेवल्स. इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें 51,000 बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट जोन है. I'll switch on to the daily chart, and the purpose behind why I'm saying to showcase the monthly, weekly and the daily chart, because these are the kind of analysis we use while giving up the trades.
एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव. सो अगर डेली चार्ट पे भी देखें, सो कल एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाया. आज भी थोड़ा सा हमने डिप देखा था, पर अगेन बैंक निफ्टी इट्स टुवर्ड्स डे नियर डेज हाई. अच्छी रिकवरी हमने नीचे के लेवल से देखी 51,400 के लेवल से. सो बैंक निफ्टी का ओवरऑल बायस इज पॉजिटिव. जब तक 51,250 के ऊपर क्लोजिंग होती है, ऊपर में 52,000 52,250 तक की जगह है बैंक निफ्टी में, बिकॉज प्राइवेट बैंक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं. कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी रेंज में है. बट ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स में देखो तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, स्पेशली अबाउट एनबीएफसी आल्सो एंड प्राइवेट बैंक्स. निफ्टी एक डल रेंज में है बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी जो एक थोड़ा सबड्यू है, ऑटो थोड़ा सा डिप है जिसके एक रेंज में फंसा हुआ है. सो सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बट देयर आर डेफिनेटली शाइनिंग पॉकेट्स जो हमें फोकस करना है और हमें कैपिटलाइज करना है. सो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में. One more announcement that I'd like to share is next week, 2nd April, there would be a event that is the trade tariffs final verdict will be there between US and India. So definitely उसके पर थोड़ी volatility रह सकती है. But so far, looking at the India Wix chart, let me pull out the India Wix chart, known as greed and fear indicator. And if you see the chart setup as on the monthly and the weekly setup, एक रेंज में फंसा हुआ है, जिसके वजह से आज इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ, बट देयर वाज नो मेजर स्पाइक इन द प्रीमियम्स. इंडिया विक्स कंफर्टेबली ट्रेडिंग बिलो 13.5 14 लेवल्स, जो इंडिकेट कर रहा है मार्केट एक रेंज में रहेगा. हल्का सा बायस इंडेक्स में पॉजिटिव है एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा. So now moving on to the stocks. First, I'll talk about 2 to 3 CDI calls that are looking very strong. First is our favorite counter within the telecom space. One is Bharti Airtel. So Bharti Airtel अगर हम चार्ट सेटअप वाइज देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है. पिछले कुछ हफ्तों से रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट स्टॉक का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. So first CDI call from the telecom space is Bharti Airtel. चार्ट सेटअप वाइज 1700 के ऊपर रेंज ब्रेकआउट दिया है. 1720 से लेकर 1730 की में आप बाय कर सकते हैं. 1690 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 1820 के टारगेट के लिए भारतीय वुड बी अ फर्स्ट सीडीआई कॉल. आई विल रिपीट द लेवल्स. 1720 से लेकर 1725 के रेंज में बाय करें. 1680 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 1820 के टारगेट के लिए. अनुज, यू कैन नोट डाउन द लेवल्स फॉर अ फर्स्ट सीडीआई कॉल. Another counter that is from the banking space, as we're talking about, we are quite positive on the banking space as a whole. So that is another counter is Kotak Mahindra Bank. So Kotak Mahindra Bank मुझे हमें अच्छे से याद है, हम काफी टाइम से उसको फोकस होके शेयर भी कर रहे थे. हमारा 4 वीकली प्रोडक्ट में भी था, काफी टाइम हमने उसको शेयर भी किया है. और चार्ट वाइज भी अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है. वीकली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अबव 2000 एंड फ्रॉम देयर ऑन वी हैव सीन वन वे रैली. जो बैंक निफ्टी में रैली को लीड किया उसने कोटक में काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस है. डेली स्केल पे लोअर राइज को नेगेट किया है एंड नाउ द स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स इज न्यू लाइफ हाई टुवर्ड्स 2250 2300 लेवल्स. सो कोटक बैंक एंड भारती इज द टू सीरिया कॉल्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम अ व्यू ऑफ 7 to 10 days. Definitely it can outshine and outperform in coming days. So Anuj, you can note down the levels for these two calls that we have shared. Yes, sir. Done. Perfect. So now look at the chart setup wise. I'll again move to the bank nifty. So if you talk about index, so let's just share or let's talk about a little bit about the rollover also. So broadly, we have seen some dip in the nifty rollover marginally. Broadly, bank nifty rollover is broadly in line with the last 3 months average. OI has been reduced, जो indicate कर रहा है कि short covering रही है इस सीरीज में, मार्च सीरीज में. So the April series would be interesting कि next few days में कैसे position build up होती है, and there on we can see the fresh leg of momentum in the indices. So far March series has been positive, up by 5.5%, led by mainly short covering. Next series, next few days would be important कि April series how does it phase it out. Looking at the monthly setup, Nifty Bank the view is positive, but yeah obviously dip पे आपको buy करना है और stock specific action काफी बढ़िया रहेगा. We have to play with that stock specific action. So looking at the chart setup wise, what we can do, Anuj, BTST calls we are still waiting for the setup. जैसे setup लगेगा हम उसको भी share कर देंगे BTST trade के लिए. But in the meantime, थोड़े stock queries we can take and how to play for this month sectors that can focus on that also we'll talk. So can you please repeat Kotak level once? I want to confirm the numbers. So you're on mute.
I was saying, can you repeat the Kotak levels once? Yeah, my voice is audible. Yes, sir. We can hear you. Okay, there was some technical glitch. Yeah. So Kotak Mahindra Bank, you can buy at current levels with a stop loss of 2100 for an upside move towards 2250, 2300 plus levels. Sir, your view on Indian hotels? Talking about the hotel space as a whole, Indian hotel has been quite being an outperformer in last couple of months. So chart wise अगर देखें तो वापस एक uptick के बाद I'll put out the weekly chart. If you see the weekly chart, it's quite good uptick we have seen, but however from last 3 to 4 days थोड़ा सा ऊपर से cool off हुआ है. So chart setup wise काफी strong है, थोड़ा सा cool off हुआ है. Again a good entry point would be around 770, 775 levels Indian hotel में. Bias overall positive है. 775 एक मेजर सपोर्ट जो है वहां पे आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं. धीरे धीरे आपको वापस 800 825 तक के लेवल दिख सकते हैं आने वाले समय. Sir, Airtel for next week? Bharti, right? Yeah. Yeah, so as you're talking about, the bias is positive on all the time frame analysis. The nature of the counter is slow and steadily, so आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा. Bias positive है, जब तक 1690 के ऊपर है, bias would be positive for 1800 plus levels. One more, as we are discussing, one trade that setup is looking very promising, and I'd like to share is VBL. So if we see the chart setup wise, the bigger trend of the stock is positive on the monthly chart. And अगर आप setup wise देखें daily scale पे थोड़ा सा cool off होने के बाद वापस उसने momentum पकड़ा है. So I think one of the trade that can be there from the BTC space that's looking good is VBL. So chart wise lower highs को negate किया है, higher lows बना रहा है. Weekly setup नीचे से अच्छी recovery आई है. So I think VBL would be our first BTST. 542 से 544 के रेंज में बाय कर सकते हैं. नीचे 532 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 560 के टारगेट के लिए VBL would be our first BTST trade. So Bajaj Finserv? NBFC as a whole has been quite outperforming, and if you talk about all the space of Bajaj Twins, both the counters are quite strong. If you talk about the levels of the Bajaj Finserv first, I'll just pull out the chart. Yeah, if I pull out the chart of the weekly scale, a strong bullish candle near life high territories, setup wise very positive. Closing above 2000 can trigger the next leg of momentum towards 2200 levels. So positionally यहाँ से मैं 8 से 10% की रैली दिख सकती है बजाज फिनसर्व में. Bias is very positive. Setup wise 1900 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 2200 के लेवल. So Tata Power? टाटा पावर ओवरऑल एक अच्छी रिकवरी हमने देखी थी लास्ट 2 हफ्तों में, बट ओवरऑल स्टार्ट का नेचर देखें तो एक रेंज में है. नीचे में सपोर्ट है 360 का, ऊपर में हर्डल है 400 का, और इस रेंज में ही मोरलेस ये स्टॉक प्ले आउट होगा. तो 360 से लेके 400 की रेंज है, स्लाइटली बायस पॉजिटिव है. स्लोली स्टेडीली आपको 385 390 तक का मूव दिख सकता है स्टॉक. Just to add one thing, as you're seeing good momentum in Bank Nifty, so it's a start of a new series. Definitely, naked option would not suggest this just the start of the new series, and we have a 3-day off the long weekend. But from a strategy perspective, as we have good knowledge training session in the start of this year, and we have discussed a lot of strategies. So looking at the Bank Nifty outlook is positive for next few days to few weeks. And looking at the chart setup wise, one can definitely go with the bull call spread in Bank Nifty. जिसमें आप क्या कर सकते हो, हमारा व्यू है कि ओवरऑल 52,000 52,500 तक का बैंक निफ्टी में मूव दिख सकता है. सो उसके ये मूव को प्ले करने के लिए आप एक बुल कॉल स्ट्रेटजी मंथली एक्सपायरी की 24 अप्रैल की इनिशिएट कर सकते हो. 52,000 का कॉल आप बाय करें, 52,500 का कॉल सेल करें. अराउंड 200 to 220 पॉइंट्स की कॉस्टिंग रहेगी. ओवरऑल बायस पॉजिटिव है. स्लोली स्टेडली जब ये मूव आएगा, सो डेफिनेटली कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड मंथली एक्सपायरी है, सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. तो बैंक निफ्टी relatively outperforming, हमारा बायस पॉजिटिव है. वन कैन इनिशिएट बुल कॉल स्प्रेड जिसमें 52,000 का कॉल बाय करेंगे, 52,500 का कॉल सेल करेंगे. अराउंड 220 to 230 पॉइंट्स वुड बी द कॉस्टिंग फॉर दिस स्ट्रेटजी.
Udam Singh ji, I did mention that please don't spam. We are going to take queries one by one. Even if you send it 100 times, we are not going to take your query. We are going to go one time one. So you And view PFC? yeah, so just to add before that, as we are seeing momentum, so Kotak, ICICI, both are looking very promising and both are very strong. So try to play the move along with that because banking is काफी outperform कर रहा है, तो make the most of it. Coming back to the stock query, PFC, right? Yes, sir. Yeah, so star setup wise, a base formation around 400 levels. Slowly, steadily, the stock is moving higher. If I look at the daily chart setup wise, एक रेंज से धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है. ऊपर में 425 430 का हर्डल है, नीचे में 410 का सपोर्ट है. सो बाइस पॉजिटिव है, बट ओवरऑल इतना कोई ग्रेट मोमेंटम नहीं है. 425 430 के ऊपर, 430 की क्लोजिंग के ऊपर फ्रेश मोमेंटम रहेगा. सो वहां पे हमारी फ्रेश ऐड करने की सलाह रहेगी. तब तक एक रेंज में काउंटर. So granules call 500 at 17. Hold or book losses? Granules. Yeah. Let me have a check. 500 call. What is the buying price? 17. Hold or book loss? Okay. So ओवरऑल फार्मा स्पेस जो है वो एक मिक्स बैग रहा है. थोड़े स्टॉक्स चल रहे हैं, थोड़े स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. सो सेटअप वाइज ग्रैनुल्स अभी भी लोअर ट्रेंड, बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में ही है. मेजर हर्डल है 515 515 का मेजर हर्डल जोन है. नीचे में 480 का सपोर्ट है. सो आई थिंक इट्स अ मंथली ऑप्शन. आप देख सकते हैं 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो उसके ऊपर फ्रेश मोमेंटम क्रिएट होएगा. तब तक आपको एक रेंज में प्ले करना पड़ेगा. स्टॉप लॉस आपको रखना है तो 480 के नीचे क्लोजिंग आती है तो बेटर टू एग्जिट द कॉल बिकॉज कोई मेजर मोमेंटम नहीं है ग्रैन्यूल्स में. Coming back to one of our BTST trade is from the banking space. As we are talking about banking is relatively outperforming. So Axis Bank is a BTST trade. 1104 अभी चल रहा है. आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस से 1090 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं 1130 1135 के टारगेट पे. सो एक्सिस बैंक इज अ फर्स्ट BTST कॉल. अभी 1105 चल रहा है. 1090 के स्टॉप लॉस से 1125 1135 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं. दैट इज अ फर्स्ट BTST कॉल. Sir, any index trade? Index trade, there's a reason Nifty is in sideways. Bank Nifty is relatively outperforming. So the best way to play for the coming week would be through strategies because we have a long weekend ahead. Saturday, Sunday, Monday we have off, so there would be no advice to buy directional buying because we have that issue of time decay factor. So strategy Bank Nifty में आप bull call spread कर सकते हैं to play the swing for next 1 week time frame. जिसमें 52,000 का कॉल बाय करके 52,500 का कॉल सेल कर सकते हैं. निफ्टी अगर आप देखें तो फ्लैट चल रहा है रिलेटिवली बिकॉज सिलेक्टिव सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. सो इंडेक्स वाइज में कोई डायरेक्शनल बाइंग सेटअप एज ऑफ नो कोई नथिंग प्रॉमिसिंग. या बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी यू कैन डेफिनेटली डिप्लॉय. So Hero MotoCorp? हीरो मोटो ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफी अंडर परफॉर्मेंस है एक्सेप्ट आइशर. बाकी सब स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म किए. चार्ट सेटअप वाइज थोड़ा सा पुल बैक हमने देखा है बट ट्रेडिंग वाइज देयर इज नथिंग मच ग्रेट सेटअप. जब तक 3850 और 3900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है हीरो मोटोकॉर्प में तो चार्ट वाइज एक रेंज में रहेगा. नथिंग ग्रेट. ट्रेडिंग रेंज में है. इन्वेस्टमेंट है तो एक अच्छी बात है बट ट्रेडिंग वाइज में देयर इज नो मेजर मोमेंटम. 3850 की क्लोजिंग के ऊपर ही कोई मेजर चेंज इन सेटअप रहेगा हीरो मोटोकॉर्प. Sir, your view on Indigo? Indigo, actually, I was just going to talk about the counter itself because it's one of our top pick within the mid cap space also. So looking at the chart setup wise, on monthly time frame, a range breakout above 5,000 levels after 7 to 8 months, a strong bullish candle. Daily और weekly scale पे uptrend में है. Daily scale पे एक range breakout दिया है. अच्छी बात है कि 5,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है इंडिगो वापस and slowly steadily we can see a move towards 5200 5300 levels. सो स्टॉक का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है. 5,000 मेजर सपोर्ट जोन हो गया है. ऊपर में 5200 5350 के लिए यू कैन बाय दिस स्टॉक. इट्स वन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग काउंटर एंड डेफिनेटली यू कैन सी अ गुड 7 to 8% रैली इन कमिंग कपल ऑफ डेज. Sir, Adani Port bought at 1160. Adani Port. Yeah. 1160. So Yes. Adani stocks broadly has been in range. Setup wise Adani Port 1160 एक मेजर हर्डल जोन था जो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है.
3 से 4 दिनों से एक रेंज में काउंटर चल रहा है, बट सेटअप वाइज एक बायस पॉजिटिव है। ओवरऑल 1150 का सपोर्ट है, ऊपर में 1200-1220 के लिए, बट मेजर मोमेंटम नहीं है, तो ये मूव जो रहेगा स्लो एंड स्टेडीली रहेगा टुवर्ड्स 1200-1220 प्लस लेवल्स। Also, as we're discussing about the index in the broader market, I would like to touch upon few sectors. So, guys, it's very important as we are in the start of a new series, April series, new financial year is going to start next week onwards. So, how to play the sectoral wise? If we talk about the top 3 sectors that we have in at the price setter wise, is one is from the banking and financial pack. So, this sector is looking very strong and make the aggressive bets in the sector to get the additional alpha. Second sector is from the chemical and fertilizer space. So Chambal, SRF, these are looking very strong. UPL आज ऊपर से थोड़ा cool off हुआ है, but setup wise काफी strong है. So first is the financial and the banking space. Second is the chemical and the fertilizer space. And third is overall sales from the metal pack. So metals अगर आप sector wise देखें तो काफी अच्छा है, और उसमें JSW Steel. So looking at the sector specific wise काफी important है कि आप sector right pick करें, because अभी भी अगर आप market में recovery अगर देखें लास्ट ऑलमोस्ट 30-35 डेज का प्राइस एक्शन, ऑटो स्टॉक्स उतना रिबाउंड नहीं हुए हैं जितना जो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स थे, दे हैव एट लाइफ हाई टेरिटरीज. सो एवरी लेग ऑफ न्यू रन, बुल रन क्रिएट्स न्यू सेट ऑफ सेक्टर्स, और उसमें आपको पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो राइट ऑफ सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो डिफेंस एक अच्छा अपटिक हमने देखा लास्ट मंथ में, इस मंथ में ऑलमोस्ट 20-25% अप. सो उसमें हमारे टॉप पिक है फ्रॉम द डिफेंस पे HL एंड BEL. सो आपको सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इंडेक्स आफ्टर अ शार्प अप मूव इज लाइकली टू बी इन अ रेंज एज वी आर डिस्कसिंग. यस, बैंकिंग इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग, जिसके हमने सजेस्ट भी किया स्ट्रेटजी के लिए करना है, पर निफ्टी रिलेटिवली एक रेंज में रहेगा. We have been seeing a monthly close. So talking about the levels wise, 23,400 का निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 23,850 के ऊपर फ्रेश तेजी होगी. बैंक निफ्टी का ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है, 51,250 इज अ मेजर सपोर्ट, ऊपर में 52,000, 52,500 के लिए you can play the move. So if you focus on the sectors, the stock selection would be much more easier. दो सीडिया कॉल हमने दिए, एक है कोटक बैंक, दूसरा है भारतीय एयरटेल. Apart from that, one BTST call we have already shared is Axis Bank. So far we have given the setup wise. बैंक निफ्टी में हमने एक बुल कॉल स्ट्रेटजी इनिशिएट करने के लिए सलाह दी है फॉर टू प्ले द मूव इन द अप्रैल सीरीज. And as we are seeing couple of events also then next week, so definitely we will see a lot of more things that are going to happen in the coming week. Stock specific action चलता रहेगा, so please play through that also. Sir, your view on Adani Enterprises? From Adani stock from the Adani group, if you see the chart setup wise, Adani Enterprise it's nothing much great. एक रेंज में फंसा हुआ है, ऑलमोस्ट बड़ा रेंज है 2200 से लेके ऊपर 2400 की. इमीडिएट रेंज है 2250 से लेके 2350 की. इसमें भी चार्ट सेटअप क्लियरली काइंड ऑफ अदानी पोर्ट जैसा है, बट अदानी पोर्ट इज रिलेटिवली बेटर. 2370 एक मेजर लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, so definitely you can see some uptick, but overall there is no major momentum, so better to exit and shift to some other counters जो better है, from the fertilizers, from the banking, from the NBFC space. वहाँ पे आपका generally definitely additional alpha बन सकता है. So REC Limited? REC and PFC, if I see the chart setup is broadly has been similar. Let me pull out the chart once again. So REC भी एक अच्छा पुल बैक हमने नीचे से देखा, जैसे मार्केट में रिकवरी देखी, पर अभी भी अगर देखें डेली स्केल पे फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के नीचे है. डेली स्केल पे एक रेंज में है, नीचे में 425 का सपोर्ट है, ऊपर में 450 का हर्डल है. सो सेटअप वाइज बायर्स विल बी स्लाइटली पॉजिटिव, बट देयर इज नो मेजर मोमेंटम. अगर होल्ड किया है तो 425 के स्टॉप लॉस से आप यू कैन होल्ड दिस स्टॉक फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 450 तक के लेवल्स. NDCC, another counter from the infra space. एक अच्छी रैली हमने देखी थी, वहां से पोस्ट एक अच्छा फॉल भी पूरा देखा है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में. वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्शन. सो लेट मी पुल आउट द वीकली चार्ट बिकॉज़ दैट विल गिव मच better interpretation and much better analysis. So setup wise, turning from the major support zone from 74 levels, but upper band पे multiple hurdles है. एक रेंज बाउंड काउंटर है, 83-84 एक सप्लाई जोन है, वहां पे थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर नीचे लिया हुआ है.
मेजर ट्रेंड अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है, 86 की क्लोजिंग के ऊपर ही फ्रेश मोमेंटम क्रिएट होएगा फॉर फर्दर अप मूव। तब तक बायस वुड बी स्लाइटली अपसाइड कैप, सो 84 85 के लेवल्स तक का आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। Adding to that, one more, I'll just try to showcase one more sector that has been outperforming the Nifty, financial services. So अगर आप देखें, beauty of this market where all the major headline indices and the broader indices are low from its life high 7 to 8% to 10%, Nifty financial service index has been trading at life high territory. Just look at the chart on the weekly and the monthly scale, a strong range breakout, and इसमें जिसके वजह से हम काफी टाइम से स्टॉक्स को आउटपरफॉर्म बोल रहे हैं, बजाज ट्विंस, श्रीराम फाइनेंस, Chola Finance, Muthoot Finance. So guys, keep a watch on this space to get the additional opportunities. So Nifty financial service, we're expecting good momentum or another 4 to 5% rally in next 1 to 2 months view. So please try to find out the stock setup within this space. Definitely, we can see a good uptake going forward. Also, as we are talking about Bhartiya days high, so slowly steadily the stock has started to make its move. And the setup wise is very strong. एक अच्छी recovery नीचे के level से आज देखी हमने. And setup wise slowly steadily we can see a good uptick towards 1800 1820 levels. So definitely you can go for it and hold it for a couple of days. So we on HAL. A counter from the defense space. So after a long time, defense space, as we're talking about, has seen good recovery in the March series. So in the monthly scale, I'll just talk about negative formation of lower highs almost after a lot of months. A strong bullish candle that clearly indicates कि एक बार short term bottom बन गया स्टॉक के लिए. Originally level wise हमें 4400 4500 तक का मूव दिख सकता है. धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. सो बायस पॉजिटिव है जब तक कि 4050 के ऊपर रहता है फॉर 4500 प्लस लेवल्स. Second BTST they have shared on the terminal and we have flashed it also. That is Dixon Tech. तो अगर Dixon Tech का हम चार्ट वाइज सेटअप वाइज देखें तो मंथली स्केल पे डाउन ट्रेंड पे था, बट इफ यू सी द वीकली चार्ट सेटअप वाइज एक अच्छा हमने नीचे से रिकवरी देखी. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेली सेटअप वाइज some pullback move can be seen going forward. So Dixon Tech if you see the chart setup wise नीचे lower band पे है, एक support reversal वाला candidate है. अभी 1300 350 13,350 के अराउंड चल रहा है. 13,100 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 13,600 और 13,800 के लिए दैट विल बी अ सेकंड बीटीएसटी कॉल Dixon Tech. Sir, IRIDA quantity 200 at 183. Looking at the positional setup of IRIDA, the chart setup wise doesn't look that promising. नीचे से पुल बैक हमने देखा है, बट 175 एक मेजर हर्डल है. जब तक वो सरपास नहीं होगा तब तक बेटर टू एग्जिट. आई वुड सजेस्ट बेटर टू एग्जिट द काउंटर एंड शिफ्ट टू सम बेटर काउंटर्स विद इन द अपट्रेंडिंग काउंटर्स. दैट वुड बी अ बेस्ट सजेशन. 175 मेजर हर्डल है, नीचे में 155 का सपोर्ट. So Anuj, as we are heading, we can take last couple of queries. Yeah, we'll take the last. HFCL will be the last query for the day, sir. No problem. Yeah, HFCL another counter, kind of a downtrend, no major momentum. जब तक कि 83, 84 नहीं निकलता तब तक there would be no major uptick on the counter. Setup wise negative है, नीचे support है 84, 85 की closing के ऊपर ही fresh momentum होगा, तब तक sideways है. So guys, we have taken almost all the queries. Sir, if you can give an update on a strategy trade and then we can end the session. Sure. So couple of ideas we have already shared today, but I'll talk about the strategy focus. Bank Nifty हमने suggest किया है bull call spread monthly. That is a view from a 1 week perspective for Bank Nifty. Bank Nifty में 52,000 का कॉल बाय करके 50 to 500 का कॉल सेल करना है. 200 से 220 की कॉस्टिंग में आप बना सकते हैं, बिकॉज मंथली ऑप्शन से तो आप वो मंथली स्ट्रैटेजी में क्रिएट कर सकते हैं. बायस बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है जब तक 51 250 के ऊपर क्लोजिंग रहती है. निफ्टी में भी बायस पॉजिटिव जब तक 23,400 के ऊपर रहता है. निफ्टी एक रेंज में है, रिलेटिवली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है. So this is a strategy. Few CDR calls we have given, few BTST call. So that's all from our side. We are heading to a long weekend. Next week we have event, so we can keep a track onto it, and then we will be ready for the action in the next week.
So guys, that will be all. Thank you everyone. Thank you Arpit. So see you again next week. And Monday we don't have any session. We have the next session on Tuesday. Thank you Thank, everyone. thank you, guys.